अस्सलाम वालेकुम guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. आज मैं बहुत ही डिटेल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, फुल बेस आई सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, so इसको ज़रूर एंड तक देखना. So I've got this bridal makeup for you today. It's a very detailed tutorial once again, and I'm going to be going through lots of information regarding the base and the eyes, etc. So carry on watching. So I'm starting off with the eyebrows. I'm using the Be Perfect Brow Gel Wax here. So when you're trying to do eyebrows like this, which these days seem to be the eyebrows that a lot of people are doing, is where you're fluffing the eyebrow up. So I've used the gel, and what I've done is back and forth, I've used my spoolie to actually distribute the product, and then I'm really taking my time and brushing the eyebrows upwards. So this takes a while. You need to do this a few times, and then you're going to comb the hair down. So ब्राउ वैक्स यूज़ की है बी परफेक्ट की. ये काफ़ी ब्राउज आजकल चले हुए हैं, तो इनको आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड काफ़ी देर तक उसको अपवर्ड्स मोशंस में लेके जाते हैं, एंड देन उसको स्पूली की मदद से थोड़े से जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको शेप में ले आते हैं, एंड देन यहाँ पे जब प्रोडक्ट थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो एक स्मॉल पेंसिल लेके या जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा फिल इन कर दें. Now what you do is you fill in the rest of the hair. So I've just used my brow wiz pencil from Benefit, and what I did is I waited for the eyebrow to actually dry down. If you use it when it's wet, it won't work. So just make sure your eyebrow has dried down, and then you go in with your pencil and just add in your little hair strokes. Then I'm going in with some concealer, and I'm using this as a base. So normally I use P. Louise, but you can use concealer as well. This is the Too Faced concealer I'm using, and I'm carving the eyebrows at the top and at the bottom. So आज मैंने कंसीलर इस्तेमाल किया है टू फेस का यहाँ पे अपना बेस, आई बेस के लिए. पी लुइस का बेस नहीं यूज़ किया, एंड इससे ये होता है कि बस आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बेस ही यूज़ करना है पी लुइस का. सो इसको पैट करके ब्लेंड कर दें सारा कुछ, एंड देन आई शैडो के लिए आपका आईज जो है वो रेडी है. So I've patted all the extra product away, and I'm going in with my eyeshadow. So my eyeshadow is going to be from Huda Beauty Empowered palette, and I'm just going in with this colour here. So a lot of people, the question that they have is I don't powder the eyes, so when they do this technique their eyeshadow goes everywhere. So I'm just going to show you exactly what I do. So I'm tapping the product in. I'm not using any swiping motions. I'm tapping the product on bit by bit, and what will happen is I will create my eye shape, tap the product on, which means that I'm getting the color payoff I need, and then as I add the product, slowly I can feel that I can move my brush a little bit more easier, and it's not dragging the product, and at that point is when I will start blending. So I just wanted to show you guys this bit just so you can see what I'm doing, and I go in quite a few times, so you have to build this up. You can't do this really quickly. I mean, you can go in with a slightly bigger brush if you wanted to, and it might speed up the process, but you have to take your time and tap on that product first and then start blending. So ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मैंने पाउडर नहीं लगाया हुआ होता, तो आई शैडो जब आप लगाते हैं तो वो सही ब्लेंड नहीं होता, या उसको ब्लेंड कैसे करें. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने टैप करना है अपना कलर, एंड आहिस्ता करके आपने स्टेप बाय स्टेप इसको टैप करना है, एंड जब आप टैप करके अपना आई कलर ले आएंगे आहिस्ता आपको फील होगा ब्रश कि आपका आसानी से वो थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है. जब आपको फील हो जाता है कि वो मतलब प्रोडक्ट को मूव नहीं कर रहा, एंड देन आप अपना ब्लेंडिंग शुरू कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने अभी ये कलर लिया है, एंड आईलिड्स पे भी सेम करूँगी, टैप करके प्रेस करके प्रोडक्ट, देन उसके बाद ब्लेंड करूँगी. So same goes with this color that I've just added on now as well. I'm using a flat brush, and it's a slightly bigger, wider brush, so it gives me more eyeshadows. Again, I'm tapping it on, and I'm slowly working my way upwards. Once I can feel that it's not dragging the base underneath, that's when I start kind of like brushing downwards and blending out the outer edges, and then I can go in with a blending brush as well and blend it away. So यहाँ पे बस एक बात करना चाह रही थी कि ऑब्वियसली मेरी वीडियोस उर्दू एंड इंग्लिश में होती हैं. आई नो सबको ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है लोगों को कि मैं उर्दू में भी बात कर रही होती हूँ एंड इंग्लिश में. तो सबको पता है या ज़्यादातर पता है कि मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, एंड उर्दू ऑब्वियसली मेरी परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी होती हैं, लेकिन कुछ जो कमेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा रूड एंड नेगेटिव होते हैं, जिनको मैं जवाब देना भी नहीं ज़रूरी समझती, टू बी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो दैट्स फाइन, लेकिन रूड कमेंट्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. सो आपने शायद देखे भी होंगे, कई दफ़ा नज़र आ जाते हैं कमेंट्स, फिर मैं उसको डिलीट कर देती हूँ. लेकिन
मतलब मेरी कोशिश यही है कि मैं हेल्प करूं सबकी जितनी मैं कर सकती हूँ। आई एम श्योर मेरी उर्दू इतनी सही है कि आप लोगों को समझ आ जाती है कि मैं क्या बोल रही होती हूँ। सो आई होप आपको ये सही लगता है कि मैं वीडियोस उर्दू एंड इंग्लिश में कर रही हूँ। ऑब्वियसली मेरी पहली ज़ुबान इंग्लिश है, इंग्लिश में सही ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरी उर्दू परफेक्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली अगर मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एक शिमर लिया है उसी पैलेट से एंड उसको फिंगर से ही अप्लाई किए जा रही हूँ। So I've added on a shimmer and from the same palette, and then I'm going in with the glitter. So the glitter was a very similar color to the eyeshadow I've used. So this is just some random glitter I picked up. I think it's Stargazer or something like that from one of the shops. And I'm applying my NYX glitter glue, and then I'm going to tap on my glitter with a fluffy brush. Now I only tapped on a little bit of glue. I actually do this in stages, so I don't go in straight away with lots of glitter. Now because I'm using a fluffy brush, it means I have a little bit more control of how much glitter goes on, so I'm going in quite lightly. Now you can see glitter has been applied and it's a little bit higher than what I wanted, but I didn't add any glue there, so it's quite easily brushed off, and then I just repeat the process until I'm happy. So NYX की glitter यूज़ की है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आईलेट पे लगाई है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे ग्लिटर लगा के एंड अपना ग्लिटर लगाऊंगी। एक ही दफ़ा मैं ज़्यादा ग्लिटर नहीं लगाती, नहीं तो वहाँ पे फॉल आउट हो जाएगा या पैची हो जाएगा। सो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको लगाते हैं, एंड जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आपने पहले देखा था कि मैंने लगा दिया था, वहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्रश आप यूज़ करेंगे एंड वहाँ से आप बस डस्ट ऑफ कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई ग्लू नहीं लगाई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा वाटर लाइन पे ब्लैक आईलाइनर लगा रहे हैं, एंड देन हम अपने लैशेस पे आ जाएंगे। So I've just added on some black eyeliner, and then I'm just going in with this black from the Huda Beauty palette, and I'm just gonna, at the top of the lashes, just line the lashes very slightly and blend it outwards. I just wanted to say that I know my tutorials are in English and in Urdu, and I hope you guys appreciate the fact that I'm trying my best to make everyone happy. Having two separate videos is a little bit difficult, but I just wanted to say, obviously, if you could keep your comments quite not to be rude, please, because I do occasionally get the rude comments and I don't bother replying to them, to be honest with you. So I am just trying my best to try and make as many people happy as possible and help people out. So I went in with my skincare, as you can see the products were all up there, and now I've gone in with my e.l.f. Putty Primer, really rubbing this into the skin. So स्किन केयर मैं कर चुकी हूँ, प्रोडक्ट सारे लिखे हुए थे। यहाँ पे थोड़ी सी कलर करेक्टिंग करूँगी। मेकअप फॉरएवर का जो पैलेट है वहाँ पे डार्क ब्राउन सा मैंने ये फाउंडेशन ली है, एंड आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैं इसकी कलर करेक्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे इसकी आइज़ काफ़ी वाटर कर रही थी, पूरी वीडियो में इसकी कर रही थी, वो बिट्स मैंने काट दी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हैड टू जस्ट स्टॉप एंड उसको थोड़ा सा टाइम दे रही थी। So color correcting with my Makeup Forever, I've gone for this orangey brown, and then I'm just color correcting in the areas that I feel that she needed a little bit of correction. Her eyes did keep watering throughout the whole video, but I've cut out most of those bits, but I just gave her time. So foundation of choice was Kryolan and the Masarrat Misbah foundation. I do love this combination. I think it gave a really, really flawless base. Now I'm going in with my Kryolan paint stick. So the Kryolan paint stick is a slightly lighter shade to what I actually needed. It's actually the darkest one I had, to be honest with you, but then I knew that the foundation I was going to add on top, including the color correction I've already done, when everything mixes in and once I've done the contour, it's all going to be okay. So I know here it doesn't look right, but I use this as more of a base and not the actual color. So I've added this on, and then I'm going to go in with my liquid foundation. So क्रायलॉन की पेंट स्टिक मैंने यूज़ कर दी है, लाइट था कलर, लेकिन मुझे पता था कि मसरत मिसबा की जब फाउंडेशन शेड में लगाऊंगी तो इसका मैच हो जाएगा। एज अ बेस मैं क्रायलॉन को यूज़ कर रही हूँ। एक ब्रश के साथ मैंने अभी लिक्विड फाउंडेशन शुरू कर दिया है एंड आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्लेंड की जा रही हूँ। सो ये जो फाउंडेशन है ब्रश के साथ लगा रही हूँ, एंड जब ब्रश के साथ मैं ये लगाई जा रही हूँ, साथ साथ जो क्रायलॉन की है उसको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड की जा रही हूँ। तो इसको बहुत टाइम लगा के मैं कर रही हूँ। तो आपने जब लेयरिंग करनी है तो आपने इस तरीके से आप कर सकते हैं। So I'm adding on my liquid foundation. So I've used different foundations with my Kryolan before. So today I'm using Masarrat Misbah, which is a foundation that you find is a Pakistani brand, but it is very, very nice.
And what I'm using is this flat brush to apply this, but as I'm applying this, I'm actually blending out the Kryolan that's underneath it as well. So you can choose to blend out your Kryolan first if you like, or whatever you used underneath, or you can do it this way. So I spend quite a bit of time here just painting it on as such, and then I'm going to use my beauty blender to actually blend everything out. So यहाँ पे मैंने सारा कुछ लगा दिया, नेक को obviously आपने नहीं भूलना, and then एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, and tapping motion से इसको blend कर दूँगी. So I'm using a damp beauty blender now, so it needs to be just very slightly damp. You know, wring out any extra water that you've got in there. Use a tissue if you need to. And then what I'm doing is tapping this all over the face, and I spend quite a while doing this and really tap out the product. Then I'm going in with my concealer, which is a Tarte Shape Tape concealer, and I'm highlighting underneath the eyes and down the center of the face, and then I'm going to blend this out as well. So यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर लगा रही हूँ, एंड इसको ब्रश के साथ लगा रही हूँ, एंड सेंटर ऑफ द फेस पे भी जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए. So even though it looks like a lot of product, it is a slightly thinner layer, but what I do is I let it sit there for a few minutes while I do the contour and things like that, and normally what happens is it gives me more extra coverage, and it blends away really, really nicely and gives you that coverage. I will also be starting my makeup course in English soon. A lot of people have been waiting for that, and I'm working on it now. I'm hoping to start uploading in October, but don't hold me there, but I will try my best. What I will be doing is actually some of the courses will be the videos that I did in Urdu, and I'll just be doing a voiceover, and then there's some that I'm adding extra segments to, and also new videos that I'm going to be adding in for you guys. And so I'm hoping that this course will benefit people. A lot of people have been asking for this, so I will try my best to explain everything like I did in my Urdu course, but it will be in English. But there won't be any certificate this time, by the way, but I have explained everything in my videos, so I will let you know, and they should hopefully be up from October. So I'm just contouring with my Too Faced concealer here. So on the I've done the contour at the chin area, so the jawline, and down the sides of the face and the nose. And the way I'm blending this out is I'm just using a small brush, and on the jawline you go downwards and upwards a little bit, so you're going to blend it out. Now the line above the concealer that you can see above, that's there to actually blend everything out afterwards. Now when you're doing the contour, you don't want to blend downwards, you want to contour towards the cheek area and backwards towards the ear and upwards. So Too Faced का कंसीलर इस्तेमाल किया, जो लाइन पे लगाया. आप देख सकते हैं कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ इसको. डाउनवर्ड्स मोशन में लेके जा रही हूँ, नेक पे भी, एंड अपवर्ड्स लेके आ रही हूँ थोड़ा सा. एंड सेम जो लाइन की कंटूर है, जो लाइन आपने नीचे नहीं लेके आनी, आपने अपवर्ड्स आपने blending करनी है, and towards the ear and towards inside the face. So different techniques होते हैं. मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा अंदर लेके आई हूँ कि इसका वो जो cheekbone definition है वो आ जाए. स्मॉल ब्रश के साथ आपने जो नोज़ कॉन्टूरिंग है वो करनी है, एंड जो लाइन आपको कंसीलर की नज़र आ रही है जो लाइन से ऊपर, वो इसलिए वहाँ पे है कि आप फिर ईज़िली उस सारा कुछ को ब्लेंड कर लें. So just blending down the sides of the nose with a smaller brush, and then I'm going to go in and add a liquid blush. So this one is just from my Makeup Forever palette that I've added on, and what I'm doing is I like to kind of like, when I blend out the concealer, is so that I'm overlapping the gel or liquid blusher that I'm using, and it just gives you a slightly nicer finish once you blend everything out. To blend out now, what I'm doing is I'm using that concealer that I use, and I'm patting it away, and I'm blending upwards and downwards into both the shadow lines that I've got now for the contour. So you're going to take your time here, making sure that nothing looks like muddy and things like that. So आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैंने अभी टैपिंग मोशन से शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ. सो वो जो कंसीलर मैंने लगाया था उसकी मदद से मैं जो नीचे वाली जो लाइन है एंड ऊपर वाला जो कंटूर किया है वहाँ पे उसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी लेके आ रही हूँ एंड ब्लेंड भी की जा रही हूँ. यहाँ पे अपने टाइम लगा के इसको करना है.
एंड देन उसी ब्रश के साथ टैपिंग मोशन से मैं कंसीलर को प्रेस किए जा रही हूँ, इसको स्वाइप नहीं करी, वाइप नहीं करी। पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती थी, लेकिन मुझे ब्रश से एक्चुअली अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे के आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके अपवर्ड्स लेके जा रही हूँ कि थोड़ा सा लिफ्टेड आ जाए, एंड ब्लशर को ओवरलैप किए जा रही हूँ। So I'm tapping away underneath now and the eye. So I used to use a beauty blender a lot before. I still do occasionally, but I actually love using a brush now. I just think once you've let the concealer sit there, and then what you do is you actually really press into the skin with the brush, and this just gives you a much more flawless finish. So I took my time, blended that in. Now before baking, what you want to do is go in and set the eye under the eyes and just underneath the jawline as well. And I use my MAC Studio Fix here. Now sometimes I use my Laura Mercier loose powder, and sometimes I use this. And then I've gone in and added in my Huda Beauty and powder to bake. So unfortunately I missed that bit out. Did a little bit of contouring, and then I'm going to blend everything out. सो मैंने पाउडर से सेट किया था जो मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर है पहले, देन मैंने लूज़ पाउडर लगा के तो इसको बेकिंग के लिए कर दिया। अगर आप पहले सेट नहीं करेंगे तो आपका केक ही आ जाएगा बेस सारा। सो अभी मैंने थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है, एंड देन आइज़ के नीचे जो है वो सारा कुछ लगा रही हूँ, आई शेडोज़ वगैरह, एंड देन शार्लेट टिलबरी का पाउडर यूज़ करके तो जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको बफ अवे कर रही हूँ। So I'm using a brush again, and I'm buffing away all the extra powder now, and I'm using my Charlotte Tilbury flawless powder here to actually buff everything away. Now you take your time. Now you can see I've obviously kind of like, I go out with my eyeshadow a bit, but then I blend it all out with my powders. I've gone in with highlighter, which is the Doll Beauty highlighter, and I'm just adding this on with a fan brush. And then I'm going to go in with some blusher and really define those cheeks again. So Doll Beauty का highlighter मैंने यूज़ किया, and then यहाँ पे मैं एक blusher यूज़ कर लूँगी and cheeks को और ज़्यादा define कर दूँगी. So I'm really stamping on the blusher and in the areas that I wanted, and then blending it out. Lipstick, I just went for a nude lipstick from Huda Beauty, and then what I did do is actually used like a gold shimmer eyeshadow on the center of the lips and blended it out, and it gave like a gold shimmery effect. So nude lipstick मैंने लगाई है, वो जब वो ड्राई हो गई उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो शिमरी लिक्विड मेरे पास था गोल्ड आई शेडो वाला, वो थोड़ा सा लिप्स पे लगा दिया था, और वहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो जो गोल्डन इफेक्ट होता है ना वो आ गया था. And then we finished off obviously the hair and things like that, and then I'll show you the final look. So yeah, हमारा final look था. I hope you've enjoyed the tutorial. I hope you're looking forward to the new videos that I will be bringing out and the course that's coming. Please do leave a comment and let me know what you thought. Again, please leave clean comments if you can do. So I hope you've enjoyed this video. Inshallah, dobara mulaqat hogi. Allah Hafiz.